Okay, so welcome you all in the 9th session of OSDP on real analysis. Today's session is taken by Dr. VIKRAM sir. So I request VIKRAM sir to start the session. Thank you, Sunil sir, and thank you so much for this opportunity to speak to your students. स्टूडेंट्स को स्पेशली मैं बताना चाहूंगा कि सुनील सर और संगीत सर और ये OSDP जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है इन्होंने, दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग और ये मेनली आपके लिए किया हुआ है. तो you are very lucky to have teachers like them, and I hope you have been enjoying the sessions. You've had a lot of nice sessions. At least I know कि जय सर ने sessions दिए हैं, सत्या सर ने दिए, तो मैंने भी उनसे काफी सीखा है. तो आई होप आप लोगों ने भी उनसे काफी सीखा है. रोहित सर ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स नाम लेने जाएंगे तो फिर एक ही बच जाएंगे. बट तो आई ऑल्सो वांट टू से apologize because initially जब ये OSDP का प्लान बना था तभी I had every intention of being here for at least 95% of the sessions. But unfortunately, I only managed to be there for one session, and that too actually for half a session. So you will have to help me a little bit because मैं था नहीं, तो मेरे को इतना पता है कि क्या क्या टॉपिक्स कवर हुए हैं, बट इतना ये नहीं पता कि आप लोगों को कितना समझा है. शायद आपको भी पता नहीं होगा आप लोगों ने कितना समझा है. तो please feel free to interrupt. Now you're used to this style of lectures, this style of teaching. So please do not hesitate to ask questions in the middle. आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक हाथ उठाइए. And the only instruction I have for you is to keep thinking. Okay, so let's start. सुनील सर, अगर ऐसे कुछ स्क्रीन विजिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज बता देना. राइट सर. ओके, सो जितना मुझे पता है, you guys have been discussing sequences, right? Right? So quickly, can somebody tell me what is the definition of a sequence? Yes, Arya. So it is a function defined from natural numbers to real numbers. It's a function from natural numbers to real numbers. Great. So ये sequences में ऐसा, there's nothing special, right? I mean, it's just a function, and the only reason I'm sort of recalling it to because notation में आप लोगों ने कुछ और use किया होगा, but I'm going to use this notation. X is a function from natural numbers to real numbers, right? This is a sequence in R. And usually, how do we denote it? This image of n we denote as xn, right? And we denote the sequence is denoted in this way. Now, one small thing I like to say every time I teach sequences is that in certain books you might see sequences denoted like this, or you might also see sequences denoted like this. But this is the notation that we are going to. So this is the notation that we are going to follow. This is the one we love. Okay. And I'll tell you why. It's a sequence. अगर मैं ऐसे लिखूं, so this curly brackets always denote a set, right? So suppose I write some set x1, x2, x3 dot 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 xn, right? Or I write the set x2, x1 dot dot x3 and so on. As sets, these two are equal, right? There is no difference between them. मतलब set में order की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह कुछ भी लिख सकता हूँ, right? But for a sequence, these two sequences, if I write x1, x2, x3 and x2, x1, x3,
as sequences, because remember it's a function ना, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू अलग है, right? Call it y1, y2, y3. So these two are different sequences. Okay, so that is why this is the notation that we are going to follow. We are not going to look at these two. Okay, ये वाला थोड़ा क्लासिकल नोटेशन है, बट इग्नोर करते हैं. ये मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा. ये कर्ली ब्रैकेट वाला नोटेशन बिल्कुल भी इग्नोर करना. ओके, राइट. तो व्हाट एल्स हैव वी डन इन सीक्वेंसेस? और क्या क्या सीखा आपने सीक्वेंसेस में? साहिल? यस सर. यस सर, आप बताइए. सर हमने और कन्वर्जेंस सीखा. कन्वर्जन सीखा, ठीक है. और सर डाइवर्जेंस के बारे में बोला था कि कर लेना खुद. तो किया किसी ने? यस सर. ओके, गुड. अच्छा, Thank तो you, sir. कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सो वी नो व्हाट कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस आर, राइट? हम सबको ये डेफिनेशन पता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का? So the important part of sequences are the so-called convergent sequences. So let us also, अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो आप प्लीज मेरे को रोकिए, सुनील सर. बट मैं फिलहाल रिकॉल कर रहा हूं, तो आई जस्ट वांट टू सॉर्ट ऑफ गो थ्रू द थिंग्स अ लिटिल. ओके, and not just Sunil sir, okay, even students, if you want me to repeat something, please stop me and ask me to repeat. So what does it mean to say that a sequence is convergent? So what does it mean to say that a sequence xn is convergent if something happens, right? What is that something? See, Rohit, who has raised their hand? Sahil and Aryan. Sahil and Aryan. Which means Rohit had also raised his hand. Yes. Rohit is yes. So, Rohit, आप ट्राई करना चाहोगे? यस सर. हाँ, बताइए. सर हम एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बोल सकते हैं किसी पॉइंट एल के लिए अगर हमें एक पॉइंट मिलता है एम, जिससे सभी एम या एम से सभी बड़े नंबर जो कि उस एल की नेबरहुड में आ जाए. ठीक है, ये तो आपने आइडिया बताया, पर अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया. कितने और लोग कंफ्यूज हैं यहाँ पे? ज्योति, आप सहमत हो रोहित के आइडिया से? सर थोड़ी थोड़ी. थोड़ी थोड़ी? सर बिल्कुल नहीं. पूरी तरह से नहीं, बट थोड़े थोड़े सहमत. ठीक है. अच्छा, अनु, आपको क्या लगता है कि एटलीस्ट आइडिया तो रोहित का सही है, बट आपको क्या लगता है कि और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें? सर आई डोंट नो बट थोड़ा थोड़ा तो कंफ्यूजन है रोहित जो बता रहा है. नहीं, देखो, रोहित ने जो बताया वो आइडिया बिल्कुल सही है कि कन्वर्जेंस का हम आइडिया हमेशा क्या लेते हैं, हम ये कहते हैं कि ओके, तो व्हाट वी हैव इज दैट, हाँ कन्वर्ज करेगा, तो दिस इज समथिंग दैट रियल एनालिसिस में ना ये हम बहुत कम करते हैं. तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये आदत डाल दो, ठीक है? और ये थोड़ा अजीब लगेगा, स्पेशली आपके घर वालों को जो आपको देख रहे हैं फिलहाल, बट आप सब 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लो और अपनी आंखों के सामने रियल लाइन इमेजिन करो, ठीक है? अब मैंने कहा xn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस. सो पहली चीज आपको क्या दिखती है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू सी? रोहित? सर लिमिट पॉइंट.
हाँ, limit दिखती है ना. So when I want to say that a sequence is convergent, the first thing I should say is that, okay, there is a limit, right? There is a limit. So again, let's draw the real line. Sorry, just 1 second. So let's draw the real line. So when I say xn is convergent, the first thing I see is a limit, right? And I think you use the notation L for limit. So the first thing I say is that, okay, a sequence is convergent means there should exist a limit, right? So if I want to make a definition, I want to be as precise as possible, ना? मतलब अगर मैं आइडिया दूं तो चांसेस है मेरे आइडिया से लोग कंफ्यूज होंगे, राइट? क्योंकि मैं बताना तो बहुत कुछ चाहता हूं पर वो दिमाग से मुंह तक वर्ड्स आने तक चीजें थोड़ी कंफ्यूज हो सकती है. सो आई वांट टू मेक इट एज प्रिसाइज एज पॉसिबल. सो लेट्स ट्राई टू सी. वी सी द लिमिट फर्स्ट, राइट? हाउ मेनी लिमिट्स डू यू सी फॉर अ सीक्वेंस? आपको 10 अलग लिमिट दिख रहे हैं, 50 लिमिट दिख रहे हैं, 100 दिख रहे हैं, या सिर्फ एक दिख रहा है? यस ज्योति, सर 1 एक ही दिख रहा है ना फिलहाल. फिलहाल तो मतलब हमको पता नहीं और हो सकते हैं, बट फिलहाल तो हमको एक ही दिख रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि चलो there exists a limit. So what is the quantifier that we see here? So we say that there exists some L where in R such that something happens. ठीक है? What is that something? What is the relation between the sequence and R? We say that xn converges to L, right? So we find a real number L in R such that xn converges to L. Okay. Should we be satisfied with this as a definition? I mean, ये तो subjective बात हुई. We can be satisfied if we want to, but because we are mathematicians, we shouldn't be satisfied. Why? Because जो yellow में लिखा हुआ है, let's also try to make that a little precise, no? अभी इसमें भी मैं पूछूंगा कि ठीक है, आपने तो बता दिया there exists L in R such that xn converges to L. So the next question I will ask you is, what does it mean to say that xn converges to L? Right? तो again, अभी रोहित ने second part क्या कहा था? कि there is some m such that m के बाद सारे terms L के neighborhood में होंगे, right? But कौन से neighborhood में भाई? सिर्फ एक neighborhood में, या दो neighborhood में, या सारे neighborhoods? तो ये जय सर ने किया होगा, रे, कि अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? Again, close your eyes and imagine. So now I have an L, and what I'm saying is that, okay, the terms of the sequence come close to it. How close? As close as I want it to come. Matlab, it doesn't matter. You give me any neighborhood of L, I should be able to find terms of the sequence in that neighborhood, right? So when I say you give me any neighborhood, what does that mean? So if I draw any picture like this, right? कोई भी बना लो, आप ऐसा वाला बना लो, आप इतना बड़ा बना लो और छोटा बना लो, it doesn't matter. You draw any picture like this, what I can guarantee is that I will find terms of the sequence in there, right? So the next thing I say is that, okay, now you give me any neighborhood. Now neighborhood means L के आसपास में थोड़ा distance travel कर रहा हूँ, right? So you give me any distance. If I travel that distance around L, I should meet someone, some term of the sequence. मेरा एक दोस्त मुझे मिल जाएगा, right? So that's why we say that, okay, you give me any epsilon positive, something happens. So this neighborhood I can think of as the set L minus epsilon, L plus epsilon. Now what happens over here? What happens, I'm saying, is that, okay, can find
terms of the sequence in this neighborhood, right? So should we again be satisfied with this sentence? No, because again we are mathematicians, right? तो हमको और precision चाहिए. What does it mean? अभी am I going to be satisfied if I find one term of the sequence or two terms of the sequence? नहीं. What I'm saying is ये L इतना special है, right? L is so special that what I can find is, so I have x1, x2, some xn dot dot dot, ये चलता जा रहा है, right? What I can find is I can find some stage. इसके पहले क्या हो रहा है मेरे को कुछ पता नहीं, right? But ये stage मान लो xn naught है, इस stage के पहले क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं, but मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि इसके बाद कोई भी term ले लो sequence का, that is going to be in here, right? So what I say is that there exists a stage, that means there exists some n naught in n such that something happens. What is that something? All terms of the sequence. That means you give me any n bigger than equal to n naught. What should happen? This xn should belong to L minus epsilon L plus epsilon. Right? Or another way of writing this is mod of xn minus L should be less than epsilon. Yeah? So take 20 seconds, think about this. If there are any questions, please raise your hand. Yes, Sahib. सर यहाँ पे गिवन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट दिया है, तो इसमें सर n जो वो कोई भी नंबर आ सकता है कि सिर्फ नेचुरल नंबर ही? नेचुरल नंबर ही. नेचुरल नंबर ही. हाँ, क्योंकि देखिए Okay, n क्या दे रहा है, n हमें एक स्टेज दे रहा है, राइट? n मेरे को बता रहा है कि मैं कौन से स्टेज पे हूँ, x1 पे हूँ, x2 पे हूँ, xn पे हूँ. और Yes, मैं sir. क्या कह रहा हूँ कि मेरे को ये n नॉट एक स्टेज ऐसा मिल रहा है, ठीक है? ये Yes, n sir. नॉट हो गया कि अगर मैं n नॉट से बड़ा कोई भी n लूं और करस्पॉन्डिंग xn देखूं तो मेरे को पता है वो xn कहाँ है. Yes, sir. Okay, sir. So again, this is how ये everything that जय सर ने जो किया, सत्य सर ने जो किया, रोहित सर ने जो किया, all of these things are connected because आपको ये एक स्किल सीखना कि हमारा जो आइडिया है उसको हम प्रिसाइज कैसे करें, ठीक है? अभी जैसे रोहित नहीं कहा था, करेक्ट? आप जो कह रहे थे, क्या आपका आइडिया इसमें कैप्चर हो गया? यस सर. यस. और ज्योति को थोड़ी प्रॉब्लम थी ना आपके आइडिया से? ज्योति को और अनु को थोड़ी प्रॉब्लम थी ना, कंफ्यूजन था. इस स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन है? नो सर. No, right? So now you see what we've done is we've taken a very rough idea and we've made it into a very precise statement. ठीक है? तो अभी अगर मैं आपको कहूं what is the advantage of writing this precise statement? Because अभी मैं अगर आपको कहूं कि okay, suppose I give you a sequence. Say suppose I define, ये आपने देखा होगा, let me just quickly repeat. Suppose I define this sequence, so your favorite sequence 1 by n. This should be, ये मेरा favorite sequence है. और अगर आप एनालिसिस ठीक से पढ़ोगे तो आपका भी बहुत जल्दी फेवरेट सीक्वेंस हो जाएगा. तो अगर
अभी कितने लोग मानते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है? तो प्रूफ छोड़ो, प्रूफ आएगा बाद में, पर मैं पहले जानना चाहता हूँ कितने लोग मानते हैं सीक्वेंस कन्वर्जेंट। आशीष, यस सर। क्यों कन्वर्जेंट है? सर ये जीरो की तरफ लिमिट पॉइंट इसका जीरो है। तो पहली चीज आपको क्या देनी है? नाउ सी, अभी ऊपर वाले लाइन में देखो, I want to say that this sequence is convergent, so it has to satisfy the definition that I have written above, right? That means the first thing I have to find is I have to find a limit, correct? यस। So the limit is say L. Now what is the limit that I'm going to take here? Do I have a candidate? 0, ठीक है? तो अभी ऊपर वाले लाइन में मेरे को पता है कि ओके देयर एग्जिस्ट सम L, मेरे को एक L ढूंढना है। यहाँ पे मेरे को ऐसे देख के लग रहा है कि 0 के आसपास आएगा, तो मैं उसके लिए टेस्ट करूंगा। ओके, सो फॉर 0 आई टेक L इक्वल टू 0। नाउ आई वांट टू टेस्ट वेदर xn कन्वर्जेस टू 0। सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आई विल डू? साक्षी, नेक्स्ट क्या करेंगे? अभी 0 एक कैंडिडेट मिल गया हमको, तो अगला स्टेप क्या होगा? कैंडिडेट फॉर लिमिट हो गया, एक उम्मीदवार मिल गया हमको। तो नेक्स्ट हमको क्या चेक करना है? हमको ये चेक करना है ना, ये जो येलो में लिखा था ऊपर में, वेदर 1/n कन्वर्जेस टू 0। सो उसके लिए आई हैव टू मेक श्योर दैट इट सैटिस्फाइज दिस कंडीशन, राइट? सो वेयर विल आई बिगिन? अगेन मैं आपसे प्रूफ नहीं मांग रहा, मैं आपको सिर्फ पूछ रहा हूँ कि अभी मेरे को प्रूफ करने के लिए अगला स्टेप क्या होगा। नहीं पता? आशा देवी, या आशा देवी? यस सर। हाँ, अगला स्टेप क्या होगा? सर हम पहले देखेंगे कि कन्वर्जेंस हो रहा है कि 0 की तरफ, हम इसका मोड लेंगे और वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। कौन से एप्सिलॉन के लिए? सर जैसे हमने ये देखना है कि xn कन्वर्ज हो रहा है 0 की तो तरफ ना। xn कन्वर्ज हो रहा है 0 की तरफ ना, तो मतलब sir. ऊपर जो लाइन में लिखा हुआ है वो प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब आप मेरे को कोई भी एप्सिलॉन दे दो, मेरे को एक स्टेज मिलना चाहिए, राइट? यस सर। हाँ, तो अभी मेरे पास कैंडिडेट मिल गया, तो अगला चीज में क्या मांगू? अब आपको प्रूव करना है, राइट? तो अब हम Yes, क्या sir. करेंगे? अब हम कहेंगे कि ठीक है, यू गिव मी एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, कोई भी एप्सिलॉन दे दो, यू गिव मी एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव। अगर मेरे को इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है, सो अभी लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन, ठीक है? तो मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कोई भी, मतलब कहीं से कोई भी आके, मामा चाचा कोई भी आके एप्सिलॉन दे दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कहां से आए एप्सिलॉन, मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मेरे को हर एक एप्सिलॉन के लिए प्रूव करना है। तो ये लाइन आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक में, राइट? सारे टेक्स्ट बुक में, एनालिसिस टेक्स्ट बुक में ये लाइन लिखी होती है। तो इसका मतलब यही है कि मेरे को प्रूव करना है समथिंग फॉर एवरी एप्सिलॉन, तो मैं कहूंगा ठीक है, कोई भी दे दो मेरे को एप्सिलॉन, फर्क नहीं पड़ता। सो लेट एप्सिलॉन बी गिवन। नाउ व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? What we want to do is we want to find some stage. We want to find some n naught in n such that for all n bigger than equal to n naught, what happens? Mod of 1 by n minus 0 should be less than epsilon. Right? That is, want to find some n naught in n such that for all n bigger than equal to n naught,
अभी ये mod of 1 by n minus 0 is just mod of 1 by n, but because n is positive, 1 by n is positive, so mod of 1 by n is just 1 by n, right? So this is what I want to find. How do I find it? Is there something, कोई छू मंतर वाला स्टेटमेंट है जो मेरे को ऐसे तुरंत दे देगा? Is there something which tells me that okay, I can always find, now epsilon अभी मेरा fixed है, I can always find some n naught such that this happens? Now see, again, let's not be in a rush. Let's break it down. Now, first thing I do is let's make some observations. If I take any n bigger than equal to n naught, what is the relation between 1 by n and 1 by n? कौन सा बड़ा है इसमें? Yes, Yashashvi. Yes, sir. If n is bigger than n naught, which one among 1 by n and 1 by n naught are bigger? So 1 by n naught is bigger. 1 by n naught is bigger, no? So if I take any n bigger than n naught, I know that 1 by n is less than equal to 1 by n, right? So now my epsilon is fixed. Suppose we find some n naught such that, suppose we find some n naught in n such that 1 by n naught is less than epsilon. अगर मेरे को ऐसा n naught मिला, then I'm done, no? Then you give me any n bigger than equal to n naught, I know that one. So then you give me any n bigger than equal to n naught. So let me write it. Suppose we find some n naught in n such that 1 by n naught is strictly less than epsilon. Then हमको क्या मिलेगा? If n is bigger than equal to n naught, what do I know? फिर मेरे को पता है 1 by n is less than equal to 1 by n naught. But 1 by n naught is less than epsilon. Therefore 1 by n is less than epsilon. So all I need to do is I need to find one n naught such that this happens. So now my question is, how many of you have an answer or guess? Let me ask somebody. Mehak? Yes, sir. हाँ, तो क्या ऐसा n naught मुझे मिलेगा? Guess करो. डरो मत, सही गलत कुछ नहीं है यहाँ. Guess करो. अच्छा ठीक है, तो आशा देवी. यस सर. हाँ. सर AP3 से हमें पता है कि कोई भी AP3 मतलब क्या है? Archimedean property, right? यस सर. So that is our abracadabra statement. ये हमारी जादू की छड़ी है. Archimedean property. This is precisely the statement of Archimedean property, right? इसका जवाब है yes, right? तो हमने क्या किया? हमने स्टार्ट किया था एक एप्सिलॉन पॉजिटिव से जो आर्बिट्ररी था, और इस एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए हमने क्या प्रूव किया कि देयर एग्जिस्ट सम n naught in n such that you give me any n bigger than equal to n naught, I know that 1 by n is less than. एंड इसके पहले हमने क्या गेस किया था? हमारा वो था देयर एग्जिस्ट्स ln r.
हमने लिया था L equal to 0. हमारा इस कैंडिडेट के लिए हमने ये प्रूव किया. But again, did we prove it for just one epsilon? No, right? Now this is the beauty. I mean, okay, I said let epsilon be given, and then I only work with that specific epsilon. So उस specific epsilon के लिए मेरे को ये n naught मिला. But now I go back. Was there anything special? Did I go to my favorite cousin and say कि भाई तू मेरे को epsilon दे दे क्योंकि मेरे को पता है वो अच्छा आदमी है? नहीं ना. मैंने तो खुला ऐलान कर दिया था कि कोई भी मेरे को epsilon दे दो, फर्क नहीं पड़ता. तो मेरे को नहीं पता ये epsilon कहाँ से आया. But it didn't matter. So now I can say that you give me any epsilon positive. Right? You give me any epsilon positive, I can always find some n naught. So I said for all n bigger than equal to n naught, 1 by n is less than n. Yeah? Is that okay? Okay. So, any questions? Let me lower everyone's hand. तो ये तो आप लोगों ने रोहित सर के क्लास में किया हुआ. तो मैंने रिपीट क्यों किया? Two reasons. One reason is to make sure that whatever notation I'm using, that is clear to you. Okay. Second reason is कि I'm sure आप लोगों को सारे आइडियाज समझ में आ गए. बट एक बार वो आइडिया दोबारा देखो या किसी और की आवाज से सुनो तो वो दिमाग में बैठ जाता है. Right? But the most important reason for repeating this is to show you the power of writing this definition. See, because in analysis, quite often what happens is हम सबको ये epsilon delta definition से डर लगता है, ये epsilon n naught definition से डर लगता है. ऐसा लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं, right? But अब आपको ये अंदाजा आ जाना चाहिए that if I want to show something is convergent, this not only tells me, this not only tells me what the definition is, what the meaning of convergence is, but this also gives me an algorithm. Right? जैसे ये सवाल शायद किसी ने पहले आपसे पूछा होगा, but raise your hands. If you, अगर आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, अगर ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया कभी लाइफ में, तो प्लीज रेज योर हैंड्स कि जब एग्जाम में या असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं, राइट, आप क्वेश्चन पढ़ते हो फिर आप आगे कुछ कर नहीं पाते क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा डाउट होता है कि यार वेयर डू आई स्टार्ट. उस बात का कंफ्यूजन होता है कि मुझे पता नहीं शुरुआत कहाँ से करें. कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? रेज योर हैंड. अब देखो, अब कितने ऐसे फटाफट सब लोग हाथ उठा रहे हैं. अपना दुख बांटने के लिए सब तैयार है यहाँ पे, है ना? ये सबके साथ होता है, सबके साथ कॉमन प्रॉब्लम है ये. Now this, notice how even for this simple sequence like 1 by n, which was nothing but a restatement of the Archimedean property, just think about it. First I said that, okay, this is sequence is convergent. So what am I supposed to do? I'm supposed to find a candidate for the limit. So, okay, I looked at terms of the sequence. I made a guess about the candidate. I said, okay, 0 should be the limit. Okay, let's try with that. Then, okay, for 0, what am I supposed to show? For every epsilon, something should happen. Okay, because I want to show something for every epsilon, let's say that, okay, suppose somebody has given me an epsilon. Let's see if I can do something for that. Then what am I supposed to find? I'm supposed to find an n naught. So I didn't prove anything. I didn't solve anything. All I did was I kept asking myself the same question. What does it mean to say that xn is convergent? Then what does it mean to say that xn is convergent to 0, right? What is the next thing that I have to find? What is the next thing that I have? Yeah. तो जो आप लोगों ने वो फाउंडेशंस किए, जो क्वांटिफायर्स, स्टेटमेंट्स, वो सारी चीजें की है, that is extremely important precisely for this reason. Okay? And I'll tell you. So, are there any questions? Is this point clear?
Now I'll tell you another reason why writing down this definition is very useful. Why writing down this definition is very, very useful. अभी ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ होगा कि sequences important क्यों है, especially convergent sequences important क्यों, right? Now, why are convergent sequences important? Now, there are many reasons. There are absolutely many reasons. But जैसे आप लोगों ने शायद पता नहीं किसने किया, शायद सत्या सर ने ये किया होगा, डेंसिटी ऑफ रैशनल्स हुआ है आपका? सर डेंसिटी क्वेश्चन नहीं हुआ। नहीं, ठीक है। अच्छा, तो सबको स्क्वायर रूट 2 तो पता है, राइट? या पाई सबको पता है, ठीक है। पहली बार लाइफ में आपने जब पाई से मुलाकात हुई थी आपकी, तो वो किस बेस में मिला था आपको? स्कूल में याद कीजिए, 22/7, राइट? स्कूल में हम हमेशा लेते थे पाई इक्वल टू 22/7, राइट? जब हम थोड़े बड़े हुए, कॉलेज में आए, तो किसी ने कहा नहीं यार 22/7 नहीं कहना, 3.14 ले, राइट? फिर और थोड़े बड़े हुए, फिर हमने मैथ्स में स्पेशलाइजेशन स्टार्ट किया, फिजिक्स प्रैक्टिकल्स में हमने देखा कि यार अभी तो हमको 3.141 लेना है। फिर और हम करने लगे, फिर और एक्यूरेटली एरिया ढूंढना है, तो फिर हमको लगा 3.1419 लेना है, राइट? So what are we doing? We don't know the exact value of pi. What we're doing is we're trying to sort of approximate, right? और ये प्रोसेस एनालिसिस में हम हमेशा करते हैं। जैसे आप लोगों ने कॉलेज में आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोर्स हुआ होगा, बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, ये सारी चीजें की होंगी आपने, एटलीस्ट सुना होगा। नहीं सुना है तो अभी सुन रहे हो। बट इसमें क्या है कि हमको एक पॉलिनोमियल के रूट ढूंढने हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि अच्छा मेरे को पता नहीं रूट क्या है, तो मैं एक वैल्यू से स्टार्ट करूंगा, कोई भी एक आर्बिट्ररी रियल नंबर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अगर ये मैं टेस्ट करूंगा पॉलिनोमियल में डाल के, अगर 0 देता तो अच्छी बात है, मेरे को रूट मिल गया। अगर 0 नहीं देता तो आई विल गो टू द नेक्स्ट, आई विल पिक अनदर रियल नंबर। बट व्हेन आई वांट टू पिक अनदर रियल नंबर, आई एम गोइंग टू बी स्मार्ट अबाउट इट। मैं रैंडमली चूज नहीं करूंगा, मैं इस तरह चूज करूंगा कि यार ये जो मेरे को नहीं दे रहा था, आई वांट टू मेक अ बेटर चॉइस, राइट? So this is the whole idea. Sequences and convergent sequences are extremely important for this reason. Okay. So now this is just general TED talk tha. So now the thing is that now what we can do is, so now we know convergent sequences are important. Right? Convergent sequences are important. ये हमको पता है। अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं, ठीक है? तो मेरे को जानना है, अगर मैं कोई भी एक रैंडम सीक्वेंस दे दूं, तो मेरे को जानना है whether the sequence is convergent or not, right? But now you see that if I give you a sequence like 1/n, it is easy. But what if I give you a sequence like, say, something like xn equal to n square plus 1 by n to the power 5 plus n square plus n plus 1? अब कैसे गैस करें कि इसका लिमिट क्या है, राइट? या तो मैं आपको सीक्वेंस दे सकता हूं, मैं तो कुछ भी बना के दे सकता हूं, राइट? से n by n plus 1, इसका लिमिट क्या है? या मान लो मैंने आपको एक सीक्वेंस दे दिया, इसका लिमिट क्या है? या मान लो मैंने आपको एक सीक्वेंस दे दिया, या which is nothing but nth root of, तो आप क्या गेस कर सकते हो कि ये सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट है या नहीं है? अच्छा, एटलीस्ट कितने लोगों को लग रहा है कि 1/n से कंपेयर करें तो उतना आसान नहीं है
गेस करना। ऐसे लग रहा ना कि 1/n से कंपेयर करें तो उतना आसान नहीं है गेस करना। These sequences suddenly seem a little more complicated, right? So let us ask ourselves a vague question first. Let's ask ourselves a very vague question. What is the vague question that we'll ask ourselves? So this is a very vague question. How do we recognize convergent sequences? ये recognize का मतलब क्या होता है? How do we recognize convergence? ठीक है, this is an extremely vague question ना, हमको पता नहीं। हमारे पास फिलहाल सिर्फ डेफिनेशन है, डेफिनेशन के सिवा हमारे पास और कोई चीज नहीं, राइट? डेफिनेशन के अलावा हमारे पास और कोई चीज नहीं। ओके, सो नाउ थिंक अबाउट इट कि अगर मान लो रास्ते में आपने, पता नहीं है मेरे दिमाग में तो शाहरुख खान ही आता है, बट आप अपना फेवरेट हीरो हीरोइन जो भी है डाल लो। रास्ते में आपने शाहरुख खान को देख लिया तो आप पहचान लोगे उसको? पहचान लोगे ना? ऑफ कोर्स पहचान लोगे। अगर मान लो आपके कॉलेज में किसी ने बताया कि शाहरुख खान आ रहा है, ठीक है, और आप घर से निकलने में आपको देरी हो गई, आप जब कॉलेज पहुंचे तो आपको पता नहीं कहाँ है शाहरुख खान, पर आपको उसको देखना है, तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? दो चॉइस है, आपको पता है कॉलेज में है, ठीक है। अब एक चीज आपको पता चलेगी, आप देखोगे कॉलेज पहुंच के, आप देखोगे अगर बड़ी गाड़ी दिख रही है, थोड़े पुलिस वाले दिख रहे हैं, तो मतलब हाँ शाहरुख खान शायद आ गया, राइट? फिर आप जानना चाहोगे कहाँ है वो, तो आपके पास दो चॉइसेस है, या तो हर एक क्लासरूम में, हर एक रूम में जाके देखो वो वहां है या नहीं जब तक मिले, या आप क्या करोगे, आप देखोगे भीड़ कहाँ जा रही है ना, फिर आप उस तरफ जाओगे, यहाँ जहां भीड़ जा रही है शायद वहीं होगा वो, राइट? बिकॉज सबको देखना शाहरुख खान को, या? So these convergent sequences are something like celebrity. So let's ask ourselves this vague question: how do we recognize a convergent sequence? Matlab, if I give you a sequence, is there a way to tell whether the sequence is convergent or not? And as you can see from the examples I've given, quite often guessing the limit is not easy. मतलब ये xn equal to nth root of 2 देख लो, क्या आप guess कर सकते हो लिमिट क्या है? नहीं ना, फिलहाल ऐसे पता नहीं चल रहा, तुरंत पता नहीं चल रहा। Yes, Aryan? Sorry, sir. Actually, I thought that when we put 10 as infinity, so it would be 2 raised to power 0. We can't put n as infinity. Infinity doesn't make sense. Infinity is not a So number. by Right? checking it at extreme point, so But extreme point means what? Infinity is not a number. There is no, infinity is just a symbol, right? yes, sir. But say suppose I give you now this 2 raised to power n, again what are you going to do? We can't find the limit. Yes, sir. Or that n upon n plus 1, what are you going to do? So can we break it like this as 1 minus You 1 can upon n? break it in many ways, but the thing is that if I just give you a sequence, is it? No, you're absolutely right. There are ways in which we can sort of guess the limit of a sequence, right? But a priori, to decide whether a sequence is convergent or not, if there is something that convinces me that the sequence is convergent, then it is worthwhile trying to look for a limit, right? So what I want to do is now again, say आप when you wake up in the morning, आप सब लोग कॉलेज के लिए तैयार होते हो, राइट? तो आप रैंडमली अपने कबर्ड में जो भी कपड़े मिल जाए वो पहन के निकलते हो? नहीं, यू लुक एट इट ना, आपके पास थोड़े है कि ये घर वाले कपड़े हैं, बाहर वाले कपड़े हैं, राइट?
प्लस अगर कॉलेज में कुछ स्पेशल डे होगा या कोई फंक्शन होगा, तो you want to sort of like traditional day हुआ, do you want to sort of wear special clothes, right? So you will just look at a t-shirt and say कि नहीं ये reject है, ये मेरे को आज नहीं पहनना, right? So when I say do we recognize, I'm not making the problem simpler in any way except to say कि okay, is there a way I can look at a sequence and immediately reject it that this is not a convergent sequence, right? So मेरा जो search area है, rather than looking at all sequences, I want to see if I can ask questions like, okay, if I want to test for convergence, is there something which will immediately help me reject it? Okay. But you are absolutely right in thinking that the question, the way I've asked it, is extremely vague. Correct? It's extremely vague. So how do we make the question more precise? That is the next task. So how do we make the question more precise? क्योंकि जिस तरह मैंने ऊपर पूछा हुआ है वो तो आपका एक सिंपल है कि आप जो सीक्वेंस दे दो फिर उस सीक्वेंस के लिए मैं देखूंगा क्या करना है, राइट? So this is where the proper definition, the exact definition, precise definition of a convergent sequence helps us. Because now what I can do is, the way to make this question precise is to say assume. So what we can do is we can ask ourselves a follow-up question by saying that, okay, if xn is convergent, what properties does it satisfy? Right? This is again a slightly vague question, but this is more precise than the original question that I had asked, right? Because now my task is clear. Now what am I going to do? Now I'm going to say that, okay, suppose xn is a convergent sequence, so now we're going to understand what property is a convergent sequence. So we're going to try to figure out what are the properties of a convergent sequence. Yeah. So let's see. So suppose I start with a convergent sequence. So suppose xn is a convergent sequence. Okay. What does that mean? That means there exists some x in R. Let's repeat it. Such that for every epsilon, given any epsilon positive, there exists n naught in n, such that for all n bigger than equal to n naught, mod of xn minus x is less than x, right? That means there exists this entire thing basically can simply be written as there exists x in R such that xn converges, right? This is a symbol, no? ये symbol आपने देखा होगा. Now let's look at an example. तो हमने ये example तो already देखा हुआ, xn equal to 1 by n, right? ये हमको पता है it converges to 0. So let's try to imagine अगर मैं draw करूं तो x1 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, x3 यहाँ पे है, x4 यहाँ पे है, and so on, right? Let's look at another thing. Say xn equal to n. Is this a convergent sequence? No, right? Is this a convergent sequence? Xn equal to n? Yes, Sahil? No, sir. No. Why? Because it is a divergence. Yes, sir. No, that is not an acceptable answer. Again, I would recommend that you take this exercise. Okay. Ask yourself, एक अच्छा जय सर ने negations कराया है ना? So ask yourself a question. What does it mean to say that the sequence is not convergent? That means no real number can be a limit. That means you give me any real number, it cannot be a limit. Okay, so go through this exercise. It's actually, I think,
Let me write it as an exercise. So that the sequence is not convergent. Don't worry about divergent, don't worry about infinity. Now you have a very precise definition. If the सर sequence ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो कोई सीक्वेंस जो वो कन्वर्जेंट में नहीं है और डाइवर्जेंस में नहीं है, डाइवर्जेंट में नहीं हो सकती। इसीलिए मैं डाइवर्जेंट तो कह नहीं रहा, यस सर, कन्वर्जेंट एंड नॉट कन्वर्जेंट, मेरे पास ये दो चीजें। यस सर, मेरे को डाइवर्जेंट नहीं पता, मेरे को कन्वर्जेंट पता है, नॉट नॉट कन्वर्जेंट पता है। ठीक है, ओके सर, हाँ? यस सर। तो अभी आपको नॉट कन्वर्जन प्रूव करने के लिए क्या दिखाना है? आपको ये दिखाना है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है दिस ये होल्ड नहीं करता। ये होल्ड नहीं करता मतलब क्या? इस सीक्वेंस के लिए xn इक्वल टू n के लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है मतलब क्या? इसका नेगेशन ट्रू होना चाहिए। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है तो पहली चीज आपको क्या देखनी है? ये स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होगा, राइट? ये नेगेशंस में हेल्प हो, इसीलिए हम हमेशा ब्रैकेट्स में लिखते हैं ताकि आपको पता है किस तरह निगेट करना। ठीक है, तो इसका नेगेशन ट्रू होना चाहिए। तो पहले आप देख लो इस स्टेटमेंट का नेगेशन क्या है, और फिर अगर वो प्रूव करना है तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, क्या करोगे। ठीक है, प्लीज ट्राई दिस एक्सरसाइज। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट सेशन में मेरे को बताना। बट अगेन लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस। हाउ विल आई ड्रॉ इट? कहां तक जाऊं मैं? क्या मेरे पेज पे इतनी जगह है कि मैं पूरा सीक्वेंस ड्रॉ कर सकूं? नहीं ना। आप कहोगे और छोटा बनाओ या थोड़ा दूर जाके देखो, थोड़ा दूर से देखो। तो अभी मैंने अपने पेज पे इतना बनाया, आप कहोगे थोड़ा दूर से देखो तो इतना बड़ा दिखेगा लाइन, और दूर से देखो इतना बड़ा दिखेगा, और दूर से देखो इतना बड़ा दिखेगा, राइट? तो मैं कितना भी मैग्नीफाई कर लूं, मैं ड्रॉ करता जाऊं, क्या मेरे पास पेज इतना होगा जहां पे मैं ये सीक्वेंस ड्रॉ कर पाऊंगा? इंट्यूटिवली सोचो। आर्यन, Yes, sir. So we can't like sir. नहीं होगा ना। I mean, real intuitively Yes. it doesn't seem like I should be able to do it. But you look at the sequence 1 by n. Even though I can't draw the entire sequence, what I can tell you is that, oh, this sequence 1 by n, it is within this region. मेरे को बस इतना ही जानना है, राइट? अभी आप कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लो। Let's take another one. Let's take, say, the convergent sequence. Okay, let's take this. I'm giving you an answer to an earlier question. What is the candidate for limit here? सबको पता है। अच्छा, देख लेते हैं। n इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? ये मेरा 1 है, ये 0 है। What is x1? So 1/2. 1/2. What is x2? 2/3. Then what is x10? So 10/11. What is x100? 100 upon 100 plus 101. So what does it seem like? Do you think any term of the sequence is going to be on this side? No, right? No, sir. It seems like whatever I draw, all of these things, because I know that n is less than n plus 1, then I know that n upon n plus 1 is going to be less than 1. Right? Yeah? Yes, sir. तो जो भी होगा वो इसी साइड पे होगा, and this is of course bigger than 0. Because n is positive and n plus 1 is positive. So it seems like all my terms of the sequence are again going to be over here. Yeah. Now you try any sequence. What it looks like is that if xn is a convergent sequence, if this is a convergent sequence, so I've already said
xn converges to x, right? If xn converges to x, then what do you think? Do you think if I want to draw xn, do you think it is going to be a picture like example 2 or example 1? Sir, example 1. Example 1, right? Because again, what do we know? We know that because the sequence is convergent, that means okay, sequence xn converges to x. मेरे को इतना पता है कि मैं कोई भी neighborhood ले लूं, finitely many terms of the sequence like x1 to xn naught कहीं भी हो सकते हैं. वो हमारे लफंगे क्लासरूम में होता है ना, जब भी क्लास में नहीं होते, कुछ नहीं होते, भटक रहे होते हैं यहाँ, कभी कैंटीन में दिखते हैं, कभी कहीं और दिखते हैं, कभी बाहर दिखते हैं कॉलेज के, कभी मार्केट में दिखेंगे. ये x1 to xn naught ऐसा है, इनका कोई भरोसा नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ. बट xn naught plus 1 से आगे मैं कुछ भी देख लूं, सारे अच्छे बच्चे, सारे क्लास में, राइट, सारे टीचर के पास, राइट. बट ये x1 to xn naught भी जा जाके कितनी दूर जाएंगे? आसमान पे तो नहीं पहुंच सकते ना, ये ऐसे अमेरिका तो नहीं पहुंच जाएंगे सडनली, होंगे कहीं कॉलेज के आसपास ही, राइट, ज्यादा दूर जाएंगे नहीं. या सो व्हाट इट सीम्स लाइक, if xn is a convergent sequence, it seems like instead of drawing it on the entire real line, it seems like I just need one small part of the real line and all terms of the sequence will lie here. Right? Does everybody agree with this intuition? If you agree, let me test your attention. If you agree, don't do anything. If you disagree, raise your hand. Or if you have some confusion, raise your hand. Sahil, Vivek, confusion या disagree? सर डिसएग्री. Disagree. Very good. क्यों? सर जैसे हम इंटरवल ले रहे हैं तो सर इंटरवल में तो सारे नंबर आ जाएंगे, फिर सारे सीक्वेंस तो सर जो भी उस इंटरवल में होंगे. हाँ, नहीं, पर मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब अभी जैसे मैंने कहा कि ये x1 to xn naught बंक करके जो बाहर घूम रहे हैं, yes, शहर sir. में ही होंगे ना. यस सर. पर शहर में तो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, और भी लोग हैं. यस सर. हाँ, पर वो शहर से बाहर तो नहीं जा रहे, राइट. यस सर. तो बस वही कह रहा हूँ. यस सर. मैं ये नहीं कह रहा कि इस इंटरवल में सिर्फ सीक्वेंस के एलिमेंट्स होंगे, पर एक दायरा होगा जिसके बाहर सीक्वेंस जाएगा नहीं. यस सर. इस बात से आप सहमत हो? यस सर. Very good. Okay. So what we are saying is that there is some boundary, right? So what we notice, our intuition idea is that convergent sequence, so it xn remains within a bound. Right? Now I want to make this precise. What does that mean? When I say xn, what I'm doing is I'm looking at a set, right? I'm thinking of it as a subset of Rn. Now all of you have seen, right? Rohit sir ने इस बारे में बात किया. What is the range of a sequence? What is the range of a sequence? Say let's call it A. This is a subset of R, right? And which subset which elements will I put in this? कौन सा real number इस range में exist करेगा, lie करेगा? ज्योति? Says set of all terms of a sequence. Set of all terms of the sequence.
So that means y will lie in this set if y is the term of a sequence. What does that mean? Y is xn for some n, right? That means there exists some n in n such that y is equal to x. पर हम usually इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं ना? Yes, sir. पर ये पहले वाला जय सर ने कराया होगा या सत्य सर ने कराया होगा. इमेज ऑफ अ फंक्शन कराया है ना उन्होंने. और वहां पे ये भी बात हुई होगी कि जब इमेज ऑफ अ फंक्शन लेते हो तो जो पहला लाइन है दैट इज अ बेटर वे ऑफ राइटिंग इट. ओके, इज दैट ओके? Yes, sir. So in any case, what I'm saying is that this set remains within a certain bound. That means what I'm saying is that this is a bounded subset of R. Yeah, this is a bounded subset of R. Okay. Now, what does it mean to say that this is a bounded subset of R? Again, close your eyes and imagine. I have the real line and I'm telling you a subset is bounded. What is the first thing that you see? Yes, whoever has raised their hand. Aryan? So it means that it has upper bound as well as lower bound. So the first thing that you see is an upper bound and a lower bound, right? So now whatever that upper bound and lower bound is, what I can say is, I don't know, you might have done this, but what I can say is that A is bounded if and only if I can find some positive real number m such that for all t in A, what I have is t is between minus m and plus m. So that means I look at this interval minus m to plus m. सारे t यहाँ कहीं है, या तो यहाँ या यहाँ जो भी है, but इस दायरे के बाहर नहीं जा रहा, right? You've seen this version of bounded set? Yeah. So now the range of the sequence as a bounded set means what? That means there exists some real number m, again, such that any element belonging to the range. What does that mean? That means, what is my range? My range is nothing but, that means any element belonging to this lies within this interval. Right? That means you give me any natural number n. What I know is that minus m is less than equal to xn is less than equal to, right? xn यही कहीं होगा. कॉलेज नहीं आया पर शहर में घूम रहा कहीं तो, ठीक है? Now what is another way of writing this? This is the same as, I can write it in a much shorter way. I can say mod xn is less than, right? These two are the same. Is that clear? So what we have is, let's make a definition. So say xn is a sequence in R. That means it's a sequence of real numbers. We say that xn is a bounded sequence if there exists some positive real number m such that for all n in n, mod of xn is less than equal. Yeah, this is my definition of a bounded sequence. Is that clear? Is the definition clear? If there are any questions, you can ask. Okay. Okay. So now let's look at some examples. Can you think of some examples of bounded sequences?
फर्स्ट एग्जांपल लेट मी गिव यू, बिकॉज मैं अच्छा आदमी हूं, तो पहला मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, फिर आप मेरे को एक एग्जांपल, ठीक है? xn equal to n, is this a bounded sequence? No, sir. No. Vivek, why not? सर मतलब हम ऊपर लिख रहे हैं कि जो सीक्वेंस होगी वो सभी वो m के बीच में लाई करेगी माइनस और m, तो सर जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो इनफाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो सर इसका हम कोई भी अपर बाउंड नहीं मिलेगा। इनफाइनाइट सेट तो अपर बाउंड नहीं है सर इनफाइनाइट नंबर से नेचुरल नंबर, तो क्या होगा? तो सर हम उसकी मतलब लिमिट नहीं बता सकते वो कहाँ तक है, लिमिट नहीं बता सकते तो क्या होगा? तो सर वो बाउंडेड नहीं होगा। लिमिट नहीं बता सकते तो बाउंडेड नहीं होगा। यस सर। हाँ ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल ले लो। चलो आज मैं आपको दो तोहफे देता हूँ, एक तो ऑलरेडी दे दिया, दूसरा वाला भी दे देता हूँ। अच्छा, अभी ये बाउंडेड है? यस सर। हाँ, तो बाउंडेड है मतलब आप इसकी लिमिट बता सकते हो मेरे को? नो सर। तो फिर सर ये तो -1 और 1 को मतलब कर रहा है बार बार अप्रोच। मैं तो अप्रोच किसी को नहीं कर रहा है, यस सर। इसको नहीं पता कहाँ जाए। यस सर। फिजिक्स करूँ या मैथ्स करूँ, लास्ट मिनट तक यहाँ से वहां भटक रहा हो, राइट? यस सर। पर ये बाउंडेड सीक्वेंस है? सर पता नहीं लग रहा है इसका। पता नहीं लग रहा? यस सर। अच्छा, किसको पता है? चलो दूसरा वाला कर लेते हैं पहले। सुनील सर, आप ऐसे किसी को बुला सकते हो जिसने अभी तक इंटरैक्ट नहीं किया हो? Yeah, Priyansh. Yes, sir. Yes. Second one, is this a bounded sequence? Yes, sir. -1 raised to power n. -1 raised to the power n is bounded. So that means you have to give me a candidate for m. Can you give me a candidate for m? If we put Bounded means it has to satisfy this definition, no? yes, sir. So can you give me a candidate? Candidate. मतलब m दे सकते हो कोई positive real number such that Yes, sir. -1 to the power m is between -m and +m. So like putting the values and we get -1. We get the sequence -1, 1. -1 1 -1 1 -1 1 यही मतलब। Yes, sir. तो ये बाउंड क्या होगा, किस दायरे में रह रहा है? आप मेरे को बाउंड्री बता सकते हो? कोई भी कैंडिडेट ले लो। -1 or 1 range is -1, तो मतलब I can take m equal to 1. Then what I know is that for all n in n, -1 to the power n is less than equal to. So what I know is that -1 is less than equal to -1 to the power n is less than equal to, right? Yes, sir. Yes, sir. I can even take m equal to 2 because again, Yes. this also holds, right? तो आपको इतना पता है कि अगर एक अपर बाउंड मिल गया तो इन्फिनिटी में नहीं मिल गया, एक लोअर बाउंड मिल गया तो इन्फिनिटी में नहीं, right? Yes, sir. So this is bounded. What about the first one? Everyone agreed that this is not bounded, right? Yes, Asha. Yes, sir. Why is this not bounded? सर क्योंकि नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव नहीं होते हैं। कैसे पता आपको? सर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी 1। आपने पहले भी आप ही ने कहा था ना आर्किमिडियन प्रॉपर्टी वाला आंसर। यस सर। गुड। तो आशा को बहुत पसंद है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी एंड आई लाइक द फैक्ट दैट आशा को आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पसंद है बिकॉज़ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस इज नॉट बाउंडेड व्हिच इज एग्जैक्टली द स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, राइट? फिर से जादू की छड़ी आ गई। या नाउ somebody who said that infinitely many terms है इसीलिए bounded नहीं है. So let's look at the sequence 1 by n. Is this a bounded sequence? Vivek. Vivek, yes. Yes sir. Is this a bounded sequence? Yes sir.
पर इसमें भी infinitely many terms. Yes, sir. तो फिर see इसमें भी I can take m equal to 1, right? Or m Yes, equal sir. to 2. So you give me any n and n, what I know is that this 1 by n is always between -2 and 2. Yes, right? sir. Or mod 1 by n is always less. Right? But again, what does it seem like? So let's look at, now give me a convergent sequence. Can somebody give me an example of a convergent sequence? Let's say, okay, Shrishti. Okay. Yashasvi. Yes, sir. Can you give me an example of a convergent sequence? So n upon n plus 1. Very good. N upon n plus 1. Right? And again, even for this, like ऐसे नया जानने की जरूरत नहीं, तुम जो मैंने दिया हुआ वो भी यूज कर सकते हो. Right? Again, what we saw is that I can take m equal to say 3, and I know that for all n in n, this n upon n plus 1 is between -3 and 3, right? n upon n plus 1 यहीं कहीं होगा, यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, right? So what I have now is that, now again, forget about any specific example. So suppose I give you a sequence xn and I tell you xn converges to x, right? So all of you said that ज़्यादा दूर जा नहीं सकता, right? Because after a certain stage सारे बच्चे अच्छे हैं, they come close to the teacher. थोड़े बच्चे हैं जो यहाँ वहाँ चले जाते हैं, but वो भी शहर से बाहर जा नहीं सकते, right? So what we're doing now is we're making a claim. So let's do this. Let's make the following claim. Okay? At least I am making a claim. So I started with a convergent sequence. So let's say xn is a convergent sequence. Say xn converges to x. Okay, and now I'm making a claim that xn is a bounded sequence, right? I'm making a claim. First, if you agree with this claim, let's not worry about a proof. At least अगर आप सहमत हो इस आइडिया से कि हाँ ये होना चाहिए, then raise your hand. That अगर convergent sequence है तो ऐसे ज्यादा दूर जा नहीं सकता, ज्यादा फैल के बैठ नहीं सकता. There are certain rules. He has to be within certain boundaries, right? Okay. So let's see. Let's try to see if we can prove this claim. Yeah. So what are we supposed to do? That is, what are we supposed to find? That is, the claim I'm making is that I can find some positive real number such that for all n in n, mod of xn is less than equal to n, right? This is what I am claiming. So this is what I want to show, right? I want to show that this is true. Yeah. So far, I have absolutely no idea. मेरे को कोई idea नहीं है, right? Now, what do we know? हमारे पास क्या information है फिलहाल? फिलहाल the only thing we know is that xn converges to x, right? This is what we know.
What does that mean? Again, that means that so I have my x. That means if I take any neighborhood of x, right, I should be able to find all but finitely many terms of the sequence in this neighborhood, right? And this is true for any neighborhood. Yeah. So in particular, let's just अभी any neighborhood बार-बार बात करने में थोड़ा डर लगता है ना. So let's stick to just let's find some neighborhood. That means I know that this some statement is true for every epsilon, so I'm not going to keep working with every epsilon. I know it is true for every epsilon. So let's fix one particular epsilon. Okay. So can somebody give me a positive real number? Your favorite positive real number. Give me one. Let's ask somebody. Yes. Mohit. Can you give me a positive real number? Give me one. एक दे दो मेरे को. Jatin. Sir, 0.1. 0.1. चलो 0.1 लेते. ये आपका फेवरेट नंबर है. गौरव 0.1 से काम करें या और कुछ देना आपको? एक दे दो यार. One. Very good, right? 0.1 से भी काम कर सकते हैं, but one is simpler. So let's just take one for now and see. So because xn converges to x, I know for epsilon equal to 1, what I know is that there exists some n naught in n such that for all n bigger than equal to n naught, I know mod of xn minus x is less than 1, right? That means if I look at this x minus 1, x plus 1, for all n bigger than equal to n naught, xn lies here, right? अब ये जो लफंगे घूम रहे हैं बाहर वो घूम रहे हैं. मेरे को पता नहीं x1 यहाँ हो सकता है, x3 यहाँ हो सकता है, xn naught minus 1 यहाँ हो सकता है. मेरे को नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है कि xn naught के बाद सारे अच्छे बच्चे क्लास में आ गए, right? Okay, so I have now this n naught. So what I know is that okay, for all n bigger than equal to n naught, what we know is that mod of xn minus x is less than 1, right? Yeah. But what do I want to show? I want to show that xn is a bounded sequence, right? This is what I want to show. So the important question analysis में हमेशा सबसे जरूरी question यही है. Most important question every time you have to ask yourself whether you want to show something is convergent or whether you want to show something is bounded or whether you want to show something is continuous. The important question you have to ask yourself is what do we need to estimate? कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया? What do we need to estimate? अगर समझ आया तो कुछ मत करना, अगर नहीं समझ आया तो रेज योर हैंड. Very good. I like honesty. You have to be honest with yourself at least. Okay. What do I mean by what do we need to estimate? See, I want to show that this is bounded, right? तो उसके लिए मेरे को क्या प्रूफ करना था? I wanted to find some m such that mod of xn is less than equal to m. तो मेरे को एक ऐसा m ढूंढना है such that mod of xn satisfies some property, right? That means what do I need to estimate? In this case, we need to estimate mod of x, right? What does that mean? So I want to find something, right? So let's see. I want to estimate mod of xn means क्या? मेरे को देखना है कि mod of xn को मैं control कर सकता हूँ यहाँ.
right? Is there any control I can exert on this mod of xn? Okay. Now let's go back. What do I know? I don't know how to estimate this, right? I don't know how to estimate mod of xn, but what we do know is that since xn converges to x, we know how to estimate mod of xn minus x. Like मेरे को पता है कि अच्छा mod of xn minus x के साथ क्या करूं, मेरे को पता. मेरे को यहाँ पे पता है कि okay, at least after a certain stage, I know I can control mod of xn minus x, right? Okay, so I want to estimate mod of xn, and I know how to estimate mod of xn minus x. Is there a way I can relate these two? ये mod of xn से क्या मैं mod of xn minus x तक पहुंच सकता हूँ? So, did anybody raise hands? Yes, Ashish. Yes, Ashish. यस सर. हाँ, क्या कर रहे हो? सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया. अच्छा, अभी मेरे को पता है कि मैं mod of xn minus x के साथ कुछ कर सकता हूँ, इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, पर मुझे देखना है कि मैं mod of xn को कंट्रोल कर सकता हूँ, राइट? पर मेरे को कंट्रोल इसी को करना है. तो क्या मैं इस टर्म में कहीं ना कहीं mod of xn minus x बीच में फिट कर सकता हूँ? सर अगर हम x Add and subtract x, right? Very good. That's a simple trick, right? I can look at mod of xn minus x plus x. It's the same thing. Now, most important thing you will learn in analysis, triangle inequality. Using triangle inequality, what do I know? Mod x. So, yeah. Now you see, now I'm in better shape. Because now I know that if my n is bigger than equal to n naught, then what do I know? Then I know that this mod of xn minus x is less than 1, right? If n is bigger than equal to n naught, then mod of xn minus x is less than 1. I already have this. So if n is bigger than equal to n naught, then I know that mod of xn is less than equal to mod of xn minus x plus mod x. And I know this mod of xn minus x is less than 1. So this is going to be less than 1 plus mod x, right? So what I know is that, just looking, remind me of the time also, please. What I also know is that this is my x. If I look at mod xn, right? If my n is bigger than equal to n naught, then I know that my mod x, sorry. Right? Let me draw another. So I have 1 plus mod x, okay, minus of 1 plus mod x. Right? If I know my n is bigger than equal to n naught, then my mod of xn is less than equal to 1 plus mod x. That means my xn is in this neighborhood, minus of 1 plus mod x and 1 plus mod x, right? If my n is bigger than equal to n naught, then my xn is here. I can control, I have some boundary for xn for n bigger than equal to n naught, right? Now the only thing I'm worried about is, अब मेरे को नहीं पता ये जो लफंगे बाहर घूम रहे हैं, ये mod x1 हो गया, mod x1, mod x2 and so on up to mod of xn naught minus 1. I don't know how to control it. क्लास में आया नहीं है, यहाँ वहां भाग रहे हैं. तो अभी कॉलेज की बात छोड़ो, स्कूल में अगर मेरे को ऐसे बच्चों को कंट्रोल करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं या तो मॉनिटर को भेजूंगा उनके पीछे, मेरे को पता है कि कोई तो है, ये सिर्फ गिने चुने 2-4 बच्चे हैं, इनको छोड़ के बाकी सबको कैसे कंट्रोल करना है मेरे को पता है. बाकी सब, everyone else can be dominated by this 1 plus mod x, right? Everyone can be dominated by this 1 plus mod x, and I just don't know what to do with these fellows, right?
So what I can do is now I can take my M to be the maximum of this, right? मैं देखूंगा कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है. अगर 1 plus mod x बड़ा है तो वो सबको वैसे ही कंट्रोल कर रहा है. अगर 1 plus mod x बड़ा नहीं है, इनमें से कोई मान लो mod x1 बड़ा है, तो वो बाकी सारों को कंट्रोल में लाएगा, राइट? वो जहां जाएगा बाकी सब उसी के पीछे जाएंगे. So if I take m bigger than equal to mod this max of mod x1, mod x2, mod xn minus 1, and this 1 plus mod x, now let n and n be given. Let's look at this mod of xn. What are the possibilities? Now there are two possibilities. What are the possibilities? If n is less than equal to n naught, or say if n is strictly less than n naught, that means my x mod of xn is one of these guys, right? या तो एक mod x1 होगा या तो mod xn naught minus 1. Then what I know is that then mod xn is definitely less than the maximum of all of these guys. So then I know that mod of xn is less than equal to this n, right? Second possibility is if n is bigger than equal to n. Then I already know, then I know that mod of xn is less than equal to 1 plus mod x. And 1 plus mod x is also less than equal to this m, no? Because m is big, the largest among all of these fellows. So this is also less than. Yeah. So what have we shown now? What we have shown is that, thus what we have is, you give me any natural number, mod of xn is less than. Okay. Take 20 seconds, think about this. If you have any questions, let me know. If you have any questions, please raise it. Even if you think it is absolutely clear, please take 20 seconds to think about this. Okay. Yes, Aryan? Yes, sir. Sir, since we showed that mod of xn is less than or equal to mod of xn minus x plus mod x. Yes. So then mod of xn minus x is strictly less than 1. So, sir, we No, can mod we of write x, that here? yeah, mod of xn minus x is strictly less than 1 for all n bigger than equal to n. Yes, sir. So we write it like that, that mod of xn is strictly less than 1 plus mod x, or Yeah. we write less than or equal to. Well, if I write less than or equal to, does it matter? Yeah, no, sir. Law of tripod. Yes. Because less than or equal to, मतलब या तो less than या equal to दोनों में से एक भी true हुआ तो less than or equal to is still true, right? It's Yes, a compound statement. Yeah. But if you want, you can say that, okay, in this case, this is strictly less than, this is also, doesn't matter. Yeah. The important thing is I want to show this. So what we have shown is the following theorem. Every convergent sequence is bounded in. Yeah. We have actually given a proof of this. Okay. So I think this is a good time to stop, right? Sunil sir? Yes, sir.
It's already 12:30. It's already 12:30. अच्छा, तो आज जो हमने किया, how many of you understood at least 40%? That's good. That's good. Even if you've understood at least 40% now, काफी अच्छा beginning है. आप अभी group discussions में आप देख लो, discuss कर लो, ठीक है? अगर कोई दिक्कत होगी तो हम next week handle कर लेंगे उसको, ठीक है? But one last comment I'll make. So now you see that every convergent sequence is bounded. So if I want to test, if I want to recognize a convergent sequence, first thing I can ask myself is that, is it bounded? If it is not bounded, then I know that it cannot be convergent, right? If xn is convergent, implies it is bounded. So if it is not bounded, contrapositive, then xn is not convergent. So at least this theorem gives me a one way to recognize or at least discard sequences which are not convergent. But we have also seen an example of a sequence, namely -1 by n, -1 power n. This example 2, we have seen an example of a sequence which is bounded, but it is not convergent. Okay. So convergence implies bounded, but the converse is not true. Okay. So let me just make that last remark and then I'll stop. So converse of the above statement is not true. Okay. You look at the standard example. This is bounded, but not convergent. Okay. Anyway, I think I'll stop here.